Welcome to the True Rotarian podcast. This podcast is specially designed for all the true Rotarians by a true Rotarian. नमस्कार दोस्तों, हैशटैग ट्रू रोटेरियन पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आभार. Today I have immense pleasure in inviting a very dear friend and a very passionate Rotarian Bhuvnesh Ahuja, who's very lovingly called by all his friends and fellow Rotarians Gaurav. Gaurav is not only a passionate Rotarian, but he's also a trained strategist, and he's done masters in branding. He's a brand position consultant, and like me, so many in our district also call him a true Rotarian because the kind of work that he does for the society is absolutely immense and excellent to hear. Gaurav, welcome to the show. Thank you so much for coming to hashtag True Rotarian Show. Thank you, Hemant. Thanks a lot. I really appreciate this initiative of yours. Sharing the stories of people who are really willing to do something good for the society and for themselves also. Wow, fantastic. Thank you once again and welcome. Ladies and gentlemen, he's got a huge biodata, which I'll share it in the description. Anybody who's interested in knowing more about Gaurav, you are welcome to look at the description box. In short, I will talk about only three things for which he is immensely popular and known all over the district and also all over the country. One is a green Gaddi projects. Secondly, he calls himself I'm the solution. And the thirdly, he's got a foundation called Restoring Smiles Foundation. Gauravji, how do you like coming to the True Rotarian podcast first of all? It is a pleasure and honor to be here. For people like us who really wants to do something good, I come from brand positioning thing. So working with commercial brands is very good. But when we say about social things, social stories, I must say, should we share as a brand to the public so that you never know someone can be inspired somewhere to do some good in the world. Fantastic. So I really wants to extend my heartfelt thanks that you invited me to be here, and it's a great opportunity to share the story which we really want to share with the world, and we really want that people should join us and they should restore as many smiles as possible. Fantastic. Let's start a conversation with Green Gaddi projects that you started. So Green Gaddi se pehle we will go a little backward. Green Gaddi is a part of the campaign I am the solution. And when I say I am the solution, I am not talking about myself only. I go to schools, colleges, and I was in track chair also in Rotary for a couple of years, 17, 18 and 18, 19. I go to schools and colleges, and I always say to each and every young citizen of India, especially young citizen of Bharat, that you should say I am the solution to yourself. It is about them and it's about all of us. I am the solution ka purpose is that we may face any problem in our personal life, in our social life, in our community, in our area where we do live, where we work. But anybody and everybody can come and guide us or mentor us. But we have to work ourselves on that. So until and unless we don't say I am the solution to ourselves, we cannot move ahead. Tremendous. That means what we are trying to say or tell people that first believe in yourself. Absolutely. And have confidence in yourself and find a solution within yourself. Just say I am the solution to yourself. I mean, it's a small thing, but what a profound way of sort of advocating and letting youngsters know about this. And I dedicate this thing to one of my idols, you can say, one of my role models, you can say. I have a couple of two role models in my life. One is Swami Vivekananda, and another in this age, our 11th president, Dr. APJ Abdul Kalam. And I feel fortunate that he started a concept, WCIG, what can I give? And I was a very small part of that. He always used to say, if you are poorest of poor, at least you can be a smile giver. So smile and solutions, these two are the basic foundations for everybody. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, सो अगर आपकी पहली चीज़, पहला स्टेप स्माइल है,
तो आप सॉल्यूशन की तरफ इजीली बढ़ सकते हैं। वाह। और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। Correct. सो ये एक इजी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए आपके अंदर वो जो आपने खुद बोला कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू से आई एम द सॉल्यूशन टू योरसेल्फ। So I am the solution campaign, if you see the logo of I am the solution, it starts with the tricolor of our nation. It starts with तिरंगा। Right. हैशटैग जो है हमने स्पेसिफिकली तिरंगे के कलर्स में लिया है एंड जो I am the solution टेक्स्ट है वो ब्लू में है। सो इसके अंदर हमारा जो एक फील रहा है वो अपने देश और अपने भारत को लेकर के इसको आगे बढ़ाने का रहा है। Wonderful. हमने इसको शुरू किया था, डॉक्टर कलाम लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 2015 एंड देयर वाज अ वॉइड विद इन कि कुछ उनको डेडिकेट करने के लिए चाहिए था। 2016 इफ यू रिमेंबर, जस्ट आफ्टर दिवाली देयर वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड अ पोल्यूशन ब्रेक, पोल्यूशन की हॉलिडे मिली थी 4 दिन की। हाँ जी। जस्ट आफ्टर दिवाली 2016 वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन वी हैड दिस पोल्यूशन हॉलिडे। अब ये ट्रेंड हो चुका है एंड इट इज अ स्केरी फ्यूचर कि हम सिर्फ एक फेस्टिवल कह लें या एक सीजन कह लें या कोई भी रीजन बना लें कि हम किसानों पे डाल दें चाहे हम पटाखों पे डाल दें, लेकिन हम पोल्यूशन को फाइट करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं, हम उसको बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इट इज अ स्केरी थिंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। सो वन फाइन डे ड्यूरिंग दिस ब्रेक ओनली आई वाज स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। इन फ्रंट ऑफ माय कार देयर वाज अ बिग ट्रांसपोर्ट व्हीकल। वो बड़े बड़े नर्सरी के प्लांट्स उसमें थे और वो कवर्ड, आजकल व्हीकल कवर्ड होते हैं, तो उसके ऊपर से ना वो पूरा जो है ना लीव्स निकल रही थी। सो इट वाज वेरी सूदिंग टू लुक एट दैट। सो आई वाज थिंकिंग कि कितना अच्छा हो कि सभी गाड़ियों की छत पे अगर ऐसे कुछ कुछ पौधे लगे हों तो कितना ग्रीन और कितना अच्छा मिलेगा। So that was the time when you saw That this. was the initiation. To start During your the traffic Gaddi. jam only the name clicked in my mind, Green Gaddi. I thank God for this कि एकदम क्लिक किया। मैंने इमीडिएटली गूगल किया greengadi.com is available, मैंने GoDaddy पे जाके उसको बुक कर दिया। Wow. That was a simple thing. तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है honestly, and that was the day I guess that year दिवाली was around 4th 5th के आसपास की दिवाली थी। 7th के आसपास में ट्रैफिक जाम में था और एक दिमाग में ये आ चुका था कि इसका कुछ करना है। अब करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता। आई एक्सेप्ट दिस, मैं कहीं और भी इंटरव्यूज में मैंने एक्सेप्ट किया है कि उससे पहले मेरे घर में पौधे जरूर थे बट मैंने पर्सनली कभी उनको टेक केयर नहीं किया था। बट एक जो दिमाग में आया था कि हम अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी छोड़ जाएं, सांस नहीं ले पाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोविड ने हमें सिखा दिया after 3 years down the line, 4 years down the line. So next day morning I got up and you will not believe, for next couple of days I roamed around almost every nursery in Delhi NCR. मुझे हर नर्सरी में जाके मिलना था, समझना था कि मुझे ये करना है, कैसे करूंगा। और everybody was laughing at me कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है, गाड़ी की छत पे पौधे कैसे लगाओगे। अब होता क्या है कि जब जिद आ जाए और दूसरा हंसे तो जिद बढ़ जाती है, और ये हमारी आदत में है। तो वो जिद बढ़ी और just after 5-6 days, 13th of November, a day before 14th November, Children's Day, 13th was Sunday. Sunday was Rahagiri at CP. Rotary का स्पेशल राहगिरी प्रोग्राम था। डॉक्टर सुब्रा was DG at that time. That's right. I invited him कि sir you have to be there, and I invited all our PDGs also कि I am launching something. I don't know whether it will be successful or not. But एक चीज आई है मन में, मैं अपने बच्चों के लिए, that was not for society, that was an answer to my kids, that I did my bit. मैंने अपना ट्राई किया कि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, जो कार मैं चला रहा हूँ, see, using a car is a necessity. We cannot avoid that. Especially living in a metropolitan cities like Delhi NCR, we cannot avoid using a car. But at least we can do something to reduce its carbon footprint. That's So right. the idea behind the Green Gaddi is to reduce my own carbon footprint. That And creating awareness. obviously when anybody sees plants on the rooftop, so it creates some sensitization. अब मुझे कई बार बच्चे मिलते हैं जो thumbs up करते हैं, बच्चों के साथ हम लोग बात करते हैं, we always promote them कि you should pet a plant, कि आप उसको पेट करो, उसको अपने पास एक कुछ भी छोटा सा नाम दे करके, कि आपने अगर घर में कोई अपने फरी फ्रेंड्स रखे हुए हैं, साथ में एक प्लांट को आप उसका नाम दीजिए, उसको ग्रो कीजिए। When you talk to plants, when you discuss with them, this is my personal experience, you get answers, you get vibes, you get energy from them. So this was the story of Green Gaddi when it started, and it took me 3 years for a foolproof solution. Wow. Because I started with putting smaller pots in a tray and installing on the rooftop. But obviously that is not the solution. What if any accident happens? वो सारे pots निकल जाएंगे. So अब जो भी solution मैं develop करूँगा, कोई पौधा लगाऊंगा, कोई plant use करूँगा, कोई pot mix, sand mix use करूँगा, I have to wait for all the weathers to pass.
where the solution which I have developed in summers, whether this will be okay in monsoon also, whether this will be okay in winter condition also, because when we see in Delhi NCR, we get all weathers in extreme level. समर्स मिलती हैं तो हमें 52-55 तक मिलती हैं, विंटर्स मिलती हैं तो हम 0 तक भी चले जाते हैं, 1 तक भी चले जाते हैं. सो आई हैड टू सी कि क्या सोल्यूशन इस पे काम करेगा. इट टुक मी 3 years. Yes, gradually we got to know कि this is a foolproof solution and this will not also damage the vehicle. छत clean हो, उसका aesthetic part हो. So अब हम latest Green Gaddi 2.0 you can say वो लेकर के आ रहे हैं with lot of aesthetics in that. If you are buying a costly and expensive car, so you should not compromise with the aesthetics, but at the same time you can reduce your carbon footprint. And हम लोगों का एक request है कि अगर इसको social organizations, especially administration and governments इसको समझें. So जैसे buses हैं, buses is a बहुत बड़ा vacuum. You can see the lot of area is available to plant. उसके लिए I am always there. जो मेरा experience है to share that कि इसमें क्या चीज़ कमी रह गई. देखो जो कमी है जो फेलर्स हैं आई कैन शेयर दोस सो दैट वो फेलर्स रिपीट ना हो. सक्सेस के लिए तो बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी और मुझे कई लोगों ने उसके लिए बोला कि इसको पेटेंट कराना चाहिए, कॉपीराइट कराना चाहिए, बट आई वाज विद दैट आइडिया कि इट शुड बी एन ओपन थिंग, एनीबडी कैन कम एंड ज्वाइन. उसको अच्छा लगेगा, उसको नया तरीके से कुछ नया आइडिया आएगा तो इट विल बी अ ग्रेट सॉल्यूशन टू एनवायरनमेंट. तो जैसे कि आप बता रहे थे कि इसकी सोल्यूशन है आपके पास, उसके बारे में कुछ बात करेंगे. इसमें चैलेंजेस क्या क्या थे. फर्स्ट लेट मी शेयर दैट. सबसे पहला चैलेंज है कि विच टाइप ऑफ प्लांट्स शुड वी यूज सो दैट कि उनका मेंटेनेंस लीस्ट रहे. देन वी zeroed in that cactus species. We use snake plant, jade cactus, we use all these sort of asparagus. So ये जो स्पीशीज हैं ये लीस्ट मेंटेनेंस स्पीशीज हैं. सो फर्स्ट सोल्यूशन वाज कि इसका जो प्लांट्स हैं वही फिगर्ड आउट कि ये प्लांट स्पीशीज चलेगा. सेकंड वाज कि इसके अंदर जो पॉट मिक्स है दैट शुड बी वेरी लाइट वेट. एट द सेम टाइम इट शुड बी रिच इन मिनरल्स विच शुड गिव न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स. और जो डेप्थ अगर हम कार की बात करते हैं तो कार के ऊपर जो डेप्थ होती है ट्रे का दैट इज बिटवीन 4 to 5 inches. It's a very small planter which we use on tabletop. So उस डेप्थ के अंदर प्लांट को सस्टेन करना है with lightweight solution, because when we use more of sand or normal मिट्टी, so it gets heavy when it rains. पानी डालते ही ना वो heavy भी हो जाती है. So it should not get heavy, so that aerodynamics of the vehicle should not be compromised. Right. So we need to see that. So हमने इस पूरी ट्रे का वेट उस हिसाब से रखा कि एक लगेज, नॉर्मली एक लगेज हम 20, 25, 30 किलो का लेते हैं, वो एक लगेज के बराबर इस ट्रे का वेट रहे इंक्लूडिंग एवरीथिंग. क्योंकि नॉर्मली जो कार होती है या एक नॉर्मली 4-wheeler डिजाइन होता है वो डिजाइन होता है विद द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सीट्स अलॉन्ग विद 1 or 2 लगेज. वो फ्यूल एफिशिएंट रहता है. मतलब 5-seater है तो 5 लोग बैठे हैं, 1 या 2 लगेज हो, वो फ्यूल एफिशिएंसी है. द मोमेंट वो ओवरलोड होता है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी खत्म होती है, एरोडायनामिक्स में भी चैलेंज आता है. सो हमने उसको, और आप यहाँ देखेंगे अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, किसी भी मेट्रो सिटी की बात करते हैं, तो 90-95% कार्स आर अंडर यूटिलाइज्ड. वो 1 या 2 लोग यूज करते हैं एट एनी मोमेंट. इट्स अ वेरी रेयर ओकेजन कि सब लोग, पूरी फैमिली या पूरा फुल कार लोडेड आपको दिखाई देगा. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको रखा था कि वो लाइट वेट रहे, इंस्टॉल करने में, मेंटेनेंस करने के लिए अगर उतारना है, सब कुछ करने में बहुत ईजी रहे. और इसका सोल्यूशन ऐसा रहे कि वो लीस्ट मेंटेनेंस हो, पानी वाटरिंग का भी once in a week उसको वाटरिंग में उसका काम चल सके. सो वी रिसर्च्ड अ लॉट ऑन पॉट मिक्स ऑल्सो कि इसके अंदर क्या क्या मिनरल्स यूज होंगे, कोकोपीट कितना यूज होगा, कितना कॉम्पोजिशन, कितना परसेंटेज में यूज होगा. वी डिड दैट. नाउ वी नो कि कितना परसेंटेज क्या यूज करने से वी विल गेट द बेटर पॉट मिक्स. वाओ, दैट मींस इन द एंटायर जर्नी आपने एक मूवमेंट स्टार्ट करी ताकि बच्चों को से लेके सबको, ऑल दोस पीपल कैन गेट इंस्पायर्ड टू अडॉप्ट ट्रीज, talk to the trees, name the trees. That's wonderful. Now, should we get into your next vertical, which actually you started with a smile? How did the Smile Foundation started? Yeah. Restoring Smiles is a concept which was started in 2013 when I was president in Rotary. And Rotary journey started in 2010 when I joined Rotary. And I got to know about Rotary. I knew about Rotary since 2006-07, but I was never part of Rotary. I was doing a bit of help
you can say, supporting a project in Haridwar, because one of my close friends, he was part of Rotary, so I was supporting that project. But in 2010, I was part of a campaign, Hum Lal Bharat Maa Ke, where we organized, the massive blood donation camps. We organized around 400 camps, blood donation camps in a single day, 15th of August 2010. Wow. So at that time, I got in touch with Sudarshan Agarwal ji. God bless his soul. He was the man. If any blood bank has to be established, he was at the forefront. Yeah. रोटरी ब्लड बैंक दिल्ली भी उनकी ही देन है. देहरादून अगर आप आई में ब्लड बैंक देखेंगे, when he was governor, वो उनकी ही देन है. He was governor of Uttarakhand. So I got in touch with him. He inspired me and invited me that you should be part of Rotary. So that is my Rotary starting. I got to Rotary, and 2013-14 I was president. And that time there was something that I, as a youngest president, I should do something which is really required on the ground. Since 2012 when I was nominated, I was doing my research that what is the biggest issues, health issues in India. So second biggest issue, because first one was being taken care already by one of the Rotary clubs. So second biggest issue was cleft lip and palate, this facial deformity, Right. genetical. So out of every 700-750 births, one child is being born with this facial deformity, cleft lip and palate. So that was the time when it clicked that we should do something for these children. And at that time there was nothing much going on in Delhi around, you can say. So we started with this mission. We got in touch with Rotary International, that is a part of Rotary Club. That was started from Rotary Club of San Francisco 30 years back, and it is now an independent body which is working as reconstructive surgeries around the world. So I invited them to be a part of this mission, and we started surgeries. So in 2017, we started Rotary Club Delhi Restoring Smiles, and this Restoring Smiles Foundation comes in. Oh, okay. So Smiles, obviously, I was inspired and motivated by Dr. Kalam's concept of smile. So it was something which always motivated me that we should restore as many smiles as possible. I believe recently you have done a very huge project in Amrita Hospital. Yes. I believe a team of doctors had. Can you tell us something about See, that? we are doing these projects since 2013. We have been, conducting surgeries for underprivileged kids. We started with simply cleft lip and palate in 2013. Till 2018-19 we did, because after that COVID came in, and for 3 years we had to leave all these camps and surgeries because of COVID and then 2024 we invited the team from Rotary International again, and we had a very successful and massive camp organized at Amrita Hospital, Faridabad. And I thanks all my partners, Amrita and Rotary, and all my partner clubs also for this. And this gives a very eternal satisfaction that when you do something for the patient and the entire family smiles, you restore. So it brings back. So we started with cleft lip and palate. Now we have added other facial deformities also. And this year, we can say we are fortunate and that AIMS is collaborating with us, AIMS Delhi. And we'll be having burn surgeries, especially acid attack victims. Oh, that is your next project now. In August 2025, we'll be doing one camp at AIMS Delhi, where we'll be focusing on burns and acid attack victims. And October again, we'll be doing at Amrita. We'll be doing all this facial deformity, skull deformity, craniofacial surgery, which we say. We'll be conducting those surgeries also, all lip and palate, maxillofacial and craniofacial surgeries. This is and so especially adding this hand deformity also. If somebody has seen since birth, there are patients and child born with hand deformity. वो हाथ ना पूरे चिपके हुए होते हैं. It's a genetic defect. This year also we did a couple of patients like that. So we'll be adding all these sort of things now. And in future, we are planning to expand it to all sort of anomalies, so that we will be able to help and restore as many smiles as possible. So last year, we conceptualized one holistic umbrella, you can say, where we, in Rotary especially, where we really love to serve mother and child holistically. Okay. Because Rotary का primary focus भी जब हम बात करते हैं peace and conflict का, maternal and child health पे आता है. So mother and child health पे हम लोग we are focusing on, and we have given a name Rotary Cares.
Rotary Cares, okay. CARES is basically an acronym for C is for congenital heart disease, which we are already doing in Gift of Life, and HMP is Rotary Midwest is doing. C is for congenital heart disease. A is for anomalies, a different sort of anomalies which we see. So we'll be trying to cover all sort of anomalies, whichsoever is possible, with the technical support of our partners. And then R is for reconstructive surgeries. Besides lip and palate, now we have already added craniofacial, maxillofacial. So we'll be adding more of reconstructive surgeries. And E is for early intervention. That is the most important part of the entire concept, because especially in India, when we say in underprivileged section, early intervention is really lacking. They are not much aware about prenatal, antenatal care. उनका जो डायग्नोसिस होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, किस तरीके से कहाँ होना चाहिए, लोकल एरिया में वो अपने रूरल एरिया में लोकल आरएमपीज को दिखाते हैं. दे आर नॉट वेल इक्विप्ड और वेल एजुकेटेड कि वो उसको उस तरह से जज कर पाए और उसको गाइड कर पाए. बहुत बार क्या होता है हमारे पास, जैसे कुछ केसेस अभी रिसेंटली वी वर डिस्कसिंग कि क्रेनियोफेशियल में अगर हम केसेस की बात करते हैं तो जो लोकल आरएमपी है ना, उनका जो लोकल डॉक्टर होता है वो पीडियाट्रिक भी नहीं होता है. तो अगर सिर बड़ा हुआ है ना तो वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा. वो जब तक उसका एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि जब हम उसको ट्रीट भी नहीं कर पाते हैं. राइट. सो अर्ली इंटरवेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेयर वी रियली नीड टू फोकस टू स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस दैट इवन बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग कंसेप्शन, जैसे हम थैलेसीमिया के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं कि बिफोर गेटिंग मैरिड यू शुड गेट योर कुंडली चेक, हेल्थ कुंडली चेक, कि अगर दोनों ही लोग थैलेसीमिया माइनर होंगे सो उस बच्चे की क्या गलती है जो थैलेसीमिया मेजर इस दुनिया में आएगा. राइट. सो अर्ली इंटरवेंशन में भी हम लोग बिफोर कंसेप्शन, बिफोर प्रेगनेंसी, वी वुड लाइक टू एजुकेट पीपल इन स्पेशली इन दोस बेल्ट्स वेयर द एजुकेशन इज नॉट रीच्ड, कि उन लोगों को पता हो कि बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चेकअप्स प्रॉपरली हो, एंड जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी कि क्या क्या डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ों का उसको ध्यान रखना जरूरी है. एक छोटा सा एग्जांपल है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी बहुत जगह पे अभी भी ना ईयर हियरिंग टेस्ट नहीं होता है. बच्चे का पता ही नहीं चलता है 1.5 साल 2 साल तक कि बच्चा सुन ही नहीं सकता है. सो ये अर्ली इंटरवेंशन का पार्ट है. अगर ये अर्ली इंटरवेंशन रहेगा उसके अंदर, so we'll be able to cover a lot of cases. This is fantastic. In time. And S is for specialized treatment. Wow. So this CARES is C, congenital heart disease, A is for anomalies, R is for reconstructive surgeries, E is for early intervention, and S is for specialized treatment. So this will be a holistic umbrella. Rotary cares for mother and child. But this is in sort of collaboration with the hospital, and this will be a collaboration with different hospitals also, different clubs also, which are already doing a few things. Like I told you, the CHT. This is being wonderfully and as a gift of life project by Rotary Club Delhi Midwest, and HMP Singh ji is leading this. Right. So we invite all these sort of clubs and partners where they can join in, because at Rotary Club Delhi Restoring Smiles and Restoring Smiles Foundation, we do believe in partnerships. Partnerships can only give better results. Absolutely. हर आदमी हर कुछ नहीं कर सकता, हर क्लब सब कुछ नहीं कर सकता. Collectively मिल करके हम लोग एक कॉन्सेप्ट ड्राइव कर सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट जब ड्राइव हो जाएगा सो मुझे लगता है कि हम लोग we can do wonders. Fantastic. This is so wonderful. Well, ladies and gentlemen, it is so great to hear a passionate Rotarian talking about how we can give it back to the society. It started off with "I'm the solution." It started off with loving the trees, loving the greens, eliminating pollution, and now he is restoring smiles for all those people who are born with these particular problems. Please do stay in touch. If you also have any story to tell, it will be a pleasure, honor to call you to #TrueRotarian podcast. Thank you so much. Gaurav ji, thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you. Thank you.